Hi everyone, welcome back to the channel. So if you have decided to do an MBA, so your primary motive behind doing MBA might be the career with a handsome salaries. And definitely if we are investing this much fees on the MBA, like if we consider the top business school, then उसकी जो fees होती है it is 25 to 30 lakhs for the whole program. And if you are investing this much amount on your particular program, so definitely you are expecting something from that. So you are expecting something written from your MBA rather than the knowledge. That's why when you are willing to opt for an MBA degree, it is important to assess the future career trends. So in this video, I have shared the highest paying job roles for few MBA domains. But when here we consider the highest paying jobs, so at that time the selection of the college matters a lot. For example, आपने MBA कोई ऐसे कॉलेज से किया है, कोई नॉर्मल कॉलेज या टायर 3 कॉलेज से आपने MBA कंप्लीट किया है एंड यू आर एमिंग विथ योर सैलरी फॉर 30 to 35 lakhs पर एनम. सो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, यू हैव द गुड स्किल्स, एट दैट टाइम इट इज़ ओके, बट दैट इज़ द एक्सेप्शनल केस कि आपको उतना पैकेज उस कॉलेज में मिलता है. बट इन जनरल इफ़ वी टॉक अबाउट सच कॉलेजेस, सो आफ्टर गेटिंग एन MBA डिग्री फ्रॉम सच कॉलेजेस, आपका जो पैकेज रहेगा इट विल रेंज फ्रॉम 8 lakhs पर एनम टू 10 lakhs पर एनम. अगर आपने अपना MBA IIM से कंप्लीट किया है, सो एट दैट टाइम द स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर MBA फ्रॉम द IIMs आर ट्रेनेबल, एम्प्लॉयबल एंड द मोस्ट टैलेंटेड ग्रेजुएट्स ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ IIMs. एंड दैट इज़ द रीज़न जो भी स्टूडेंट्स MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करते हैं, दे आर ऑलवेज एमिंग टू टेक देयर एडमिशन इन द टॉप बिजनेस स्कूल लाइक IIMs. IIMs में जो प्रोफेसर्स होते हैं, दे आर द वेरी टैलेंटेड प्रोफेसर्स. उनका जो नॉलेज होता है that is of best level, and that is the reason they deliver their knowledge to the students. And due to this quality of education, जो students वहाँ से pass out होते हैं, they have the good knowledge with all the industrial level knowledge and everything they have with them. जो IIM का सिलेबस होता है इट इज़ डिज़ाइन इन सच वे कि आपको थेरोटिकल नॉलेज तो उसमें मिलता ही है, बट रादर दैन दैट यू विल गेट द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑल्सो. लाइक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर MBA, वेन एवर यू आर वर्किंग इन एनी इंडस्ट्री और इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, सो आपको वो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा उसके रिलेटेड आपका क्या आपको नॉलेज होना चाहिए या किस तरह से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, दैट एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लर्न इन द IIM सिलेबस करिकुलम. एंड दैट इज़ द रीज़न जो भी स्टूडेंट्स IIM से पास आउट होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो भी ज़्यादा होती है, एंड उनका जो पैकेज होता है एनुअल पैकेज, इट इज़ द हाइस्ट एनुअल पैकेज इफ़ वी कंपेयर टू द नॉर्मल MBA कॉलेजेस. After analyzing the data of last some years, these are some packages of IIM students get after doing an MBA. First is few get diamond packages which ranges up to 65 lakhs per annum. Second, few get gold packages which ranges up to 50 lakhs per annum. Third, some get silver packages up to 25 lakhs per annum. And fourth is some get bronze packages up to 15 lakhs per annum. So I have analyzed the data, and after analyzing the data, I found that there are some MBA domains which gives you the highest salary package after completion of your MBA from the IIMs. So in that, first is MBA in International Business. So after completion of your MBA in International Business, you will have an idea of business on the global level. Rather than that, after completion of your MBA in International Business, you will get to know the international business term like export, imports, trading, that everything you will learn over here. And this MBA does not restrict you to work in your country only. You have the choice, you can work out of the country on the international level also. The highest paying job roles for this MBA specializations are: first is International Business Development Manager, second is Government Affairs Director, and third is Administrative Service Manager. Second is Marketing. So for example, in marketing, if you are working as a marketing manager, then at that time organization में जो भी marketing के related operations हो रहे हैं, you need to pay attention on that. Rather than that, आपके organization में जो भी product को या services को लेके जो भी marketing options वहाँ पे available हैं, you need to focus on that also. So if you want to be successful in your marketing career, so at that time you need to have your creative mindset, and rather than that, you need to have a good communication skills and leadership skills.
So in your entire marketing journey, you need to handle some planned as well as the unplanned activities like interviews, conferences या इसके अलावा कुछ advertising है, that everything you need to handle. So marketing में अगर आप जॉब कर रहे हो, so you are going to represent that company. आप जो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो, you are going to represent that प्रोडक्ट जिनका, अगर आप सपोज कोई मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग में अगर जॉब कर रहे हो, जो कंपनी ऑनलाइन मार्केटिंग में एजुकेशन प्रोवाइड करती है, सो एट दैट टाइम जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सो यू हैव टू रिप्रेजेंट दैट, मीन्स यू आर गोइंग टू बी द फेस ऑफ दैट कंपनी. सो यू नीड टू वर्क वेरी केयरफुली. आपको ही जो कंपनी का जो बिजनेस है वो आगे लेके जाना है, एंड दैट इज़ द रीज़न मार्केटिंग इज़ द हाईएस्ट पेइंग जॉब, जिसमें आपको वन टाइम बोनसेस भी ज़्यादा मिलते हैं, इंसेंटिव्स भी ज़्यादा मिलते हैं. इफ़ वी कंसिडर ऑल द स्पेशलाइजेशंस, देन मार्केटिंग, ऐसा बोला जाता है कि मार्केटिंग इज़ द मोस्ट अर्निंग स्पेशलाइजेशन. बट देर आर मेनी पीपल्स दे थिंक लाइक दैट जो जॉब होता है मार्केटिंग में, इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रेसफुल जॉब, बट दैट इज़ नॉट लाइक सो. अगर आपके पास में मार्केटिंग में जॉब करने के लिए जो स्किल्स चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड लीडरशिप स्किल्स रादर दैन गुड सेलिंग स्किल्स, इफ़ यू हैव ऑल दैट स्किल्स, देन you are going to be a successful marketing manager. Third is the HR. So the chief role of HR is to manage the people in the organization. For example, if you have a good leadership skill, decision making skills and communication skills, you can work into the HR also. Rather than that, जो भी organization का work culture है, you need to work on that. Employees के अगर कुछ payments है या उनके कुछ issues है, that everything you have to resolve by yourself only. So if you like to work in this environment, if you like to work on the work culturing environment, you can consider the HR job role. So after completion of your MBA from the top business school like IIMs, you will get a high salary in the HR also. Fourth is the management consultant. There are many consulting firms like Boston Consulting Group, Bain, KPMG, PricewaterhouseCoopers and many more. ये जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं, दे आर द टॉप कंसल्टिंग फर्म्स इन द वर्ल्ड. सो यू कैन गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ हाई सैलरी इन सच फर्म्स. For example, if you are working as a management consultant, then it involves in helping the organization. जो भी organization को help चाहिए, that you need to provide. अगर उनमें उसको कुछ problem आ रहा है, so you need to resolve that problem and you have to increase the efficiency of that organization. Fifth is investment banker. So if you like to work with the financial services like trading, investment banking, wealth management, then this might be the job for you. As an investment banker, you need to deal with large and complex dealings and sale for your client. You will need to make decisions for investing the money of your client, and the more money you make for your client, the better investment banker you would be. As an investment banker, you need to be good in calculations, and rather than that, you need to be good in your verbal communication and written skills. So these are 5 MBA domains you can consider with after completion of your MBA. अगर आपने टॉप बिजनेस स्कूल से MBA कंप्लीट किया है from these 5 domains, then definitely you will get the package of minimum 30 to 35 lakhs per annum after completion of your MBA. अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स क्वेरीज है, so you can reach me out to the comments. Thank you for watching the video. Do like the video and subscribe the channel.